Assalamu alaikum, my dear students. Hope that you are very happy, very alert, very agile. Let us start today's lesson. Our topic is Lost Lesson by Jung, and we are on page number 15. We will start today's lesson will be started from para number 7 onwards. Before we start our today's developments, I will have a complaint that none of my students responded to the assignments which were assigned to you. I have told you to send it your responses on WhatsApp, but I think that you are least concerned. This is not a good sign because the actual classrooms are looking very distant because of the pandemic. You have to manage and you have to do everything using a virtual mode of classrooms. So I hope that you will not repeat your negligence. You will act as responsible people, responsible boys, responsible girls. Now today's let's see some important vocabulary, important words. Lighting up. Lighting up means becoming bright. Here in the lesson, this lighting up is regarding the face. Becoming bright means कि चेहरा खिलना, खिल जाना, खुशी महसूस करना. Scranging. Scranging means searching for, खोज लगाना. Wrapped in wonder. Phrase है. Wrapped in wonder means wonderful, हैरत अंगेज, अजीब गरीब. Fence. As noun इसे यूज किया गया है लेसन में. Fence means surrounded by posts or barbed wire. बाड़ या जंगले से घिरा हुआ. Kalab. Kalab is again used as a noun. Kalab, one of its meanings is a place of entertainment, usually serving food and liquor and providing music and space for dancing and often having a flow show. ऐसी जगह जहां आपको दिल बहलाई का इंतज़ाम किया जाता है, खाना दिया जाता है, शराब पिलाई जाती है और म्यूज़िक वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है. ये शो आमतौर पर फ्लोर पे किया जाता है, फर्श पे किया जाता है. एंड इट इज सेकंड मीनिंग इज क्लब इज a stick or a bat used to hit a ball in any of the various games. इसी तरह से ये थर्ड मीनिंग इसकी हो सकती है. क्लब इज इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स participating for some common object.
ये एक एसोसिएशन होती है, लोगों की एक जमात होती है जो जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। इसके लिए वो फंड्स, पैसे वगैरह मुश्तरका तौर पर इसको कामयाब बनाने के लिए अदा करते हैं। एंड नेक्स्ट इज ही हम्स वर्ब एज वर्ब इस्तेमाल किया गया है लेसन में। इट मीन्स टू एक्सप्रेस बाय मेकिंग अ वोकल साउंड विद द लिप्स प्रेस्ड टुगेदर। इसका मतलब ये है कि कोई आह भरता है, कोई ऐसी आवाज़ निकालता है लेकिन अपने लिप्स को, होंठों को टाइट कर देता है, खोलता नहीं है। इसी तरह से स्विमिंग एज वर्ब, इसका मतलब हो सकता है टू मूव फ्रीली, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करना, मूवमेंट करना। या स्विमिंग एज नाउन, लेसन में इसे एज नाउन ही इस्तेमाल किया गया है। एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ स्विंगिंग और स्विंगिंग मोमेंट, यानी झूले की मोमेंट। डिस्कलर्ड एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है टू चेंज द कलर, स्पेशली worsening of the color, rather we should say. इसी तरह से canister, it's a cylindrical container for holding a specific object, usually with a lid. Carefree means having no worries or troubles. It's used as an adjective. Now let's read today's paragraph or today's lesson. One winter morning, I see Sahib standing by fence gate of a neighborhood club, watching two men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. The boy's question is Sahib. Sahib is rather the hero of this story. The writer finds him near a club. He is standing by the fence and watching the two young men who were playing tennis. They were dressed in white. जो इस स्टोरी का हीरो है, साहिब जो है, वो एक बाड़े के पास खड़ा है, एक जंगले के पास खड़ा है। ये जंगला या बाड़ा का एक क्लब का है। क्लब के बारे में मैंने आपको बता दिया वर्ड्स में। ये एक ऐसा मुकाम होता है जहाँ पर एंटरटेनमेंट वगैरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। तो ये देख रहा है कि क्लब में दो जवान लोग खेल रहे हैं, ये टेनिस खेल रहे हैं, और अपने आप से कह रहा है कि मैं इस गेम को बहुत पसंद करता हूँ। हम्स यानी अपने लिप्स को टाइट करके ये थोड़ी बहुत आवाज़ निकालता है। कंटेंट वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, इसी से ये लुत्फानंदोज होता है। कंटेंट मीन्स ही सेटिस्फाइड वॉचिंग इट बिहाइंड, ना खेलते हुए भी मुतमईन है, दूसरों को वो खेलता हुआ देख रहा है। और क्या कह रहा है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मीन्स देयर आर सम लिमिटेशंस। ही डेयर्स नॉट टू एंटर व्हेन द क्राउड इज देयर, व्हेन समवन इज वॉचिंग हिम। कह रहा है कि क्लब में जाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब वहां कोई नहीं होगा, अकेला जाऊंगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग,
Perhaps he has seen a swing there, which is installed inside the club. इसने एक स्विंग को झूले को वहां देखा जो उसने क्लब में इंस्टॉल जो वहां क्लब में इंस्टॉल किया गया है और ये आह भरता है उम्मीद करता है he hopes that the gatekeeper of the club will allow him to use this. Sahib too is wearing a tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. He's dressed in shirt and shorts. कमीज और निकर में ये मलबूस है, but his dress is discolored. Discolored means its color has changed worse. His dress is no more bright, no more colorful, and he has worn tennis shoes. But the tennis shoes are somewhat discarded. Someone gave them to me, he says, in a manner of an explanation. He explains that the tennis shoes, he has not purchased the shoes of his own, but someone has gifted him. किसी ने इसको ये tennis shoes दे दिए हैं. The fact that they are discarded shoes of a rich boy. और ये टेनिस शूज किसी अमीर लड़के ने फेंक दिए हैं. डिस्कार्डेड मीन्स थ्रोन अवे, no more beneficial to the person, and therefore they are discarded, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. There was one thing wrong with the shoes, and one of the shoe there is a hole. Perhaps that is why the rich boy has thrown it away. He has refused to wear the shoes. But these shoes were something soothing to the Sahib, something soothing to this poor fellow, something soothing to this rag picker boy. ये जो एक ने जो नापसंद किए हैं, अमीर बच्चे ने जिन जूतों को फेंक दिया था, ये गरीब के लिए, इस रैग पिकर बॉय के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थे. वो इन शूज़ को बहुत ही पसंद करता है और वो खुश भी है. Even shoes with hole is a dream come true. This was his dream, that one day he should get shoes. He should wear shoes. Otherwise, they were with other boys. He with other boys was walking barefooted. वो दूसरे बच्चों के साथ नंगे पांवों चल रहा था. That we have learned in the previous paragraphs of this lesson. But the game he is watching so intently out of his reach. But the tennis game, which he is watching so intently, so keenly, is yet out of his reach. अभी इस खेल के साथ टेनिस गेम जो है जिसे वो पसंद करता है, ये इसकी पहुंच से बाहर है. अभी ये खेल नहीं खेल सकता है because of poverty. Poverty didn't only restrict you from eating or wearing good things. It restricts you to make such activities. It restricts you to involve such developments which only the rich avail of.
सिर्फ ये नहीं है कि आपको गुर्बत जो आपको अच्छे खाने पीने या कपड़े या मकान से महरूम करती है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, खेल कूद है, उठना बैठना है, अ, अ, अच्छी गाड़ियों का इस्तेमाल करना, ट्रेन्स का इस्तेमाल करना, यानी बहुत सारी अनगिनत ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आपको गुर्बत एक पहाड़ बन जाती है आप और उन एक्टिविटीज़ के दरमियान. That's why the writer has written, but the game he's watching so intently is out of reach. The tense game is out of his reach because he could play. He is so active. He is so energetic. His age demands that he should play such a game. But there is one obstruction, that's his poverty. That's his position. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. Now, where was Sahib going? Why is he standing by the fence on this very moment? Because he was on way to the milk booth. वो दूध लाने के लिए जहां पर मिल्क का स्टॉल लगा था वहां जा रहा था. In his hand is a steel canister. And in his hand, canister means there is a cylindrical object, usually meant for keeping some particular object. The canister is usually with a lid. Canister एक cylindrical container होता है जिसमें आप कोई खास चीज़, दूध, चाय वगैरह आमतौर पर लाते हैं या ले जाते हैं. एंड साहिब यही दूध लाने इसी सिलेंडर को, इसी कैनिस्टर को इस्तेमाल हाथ में लिए दूध लाने के लिए जा रहा था जब वो इस क्लब के इस जंगले के साथ इन दो लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था. I now work in a tea stall down the road, he says. When inquired by the writer, he responded that he is now not going to picking rags. He has no time. This was the time when he was the master of his own. Now he has become a slave. He is working in a tea stall. Somebody is his master. Somebody directs him what he should do and what not. Pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my meals. And his freedom has been taken away at the price of rupees 800. उसकी जो आज़ाद ज़िंदगी थी वो बिक गई है 800 रुपयों के एवज. उसे 800 रुपया तनख्वाह मिलती है. वो एक दुकान पे या एक शॉप पे या इस बिजनेसमैन से काम कर रहा है. And does he like the job, I ask. His face, I see, has lost the carefree look. Now the writer asks the boy, does he like the job? But the writer sees that it was apparent that he has lost the carefree look. He was carefree when he used to pick rags. Then he was a free boy. Now this carefree look has lost. ये जो उसके जो carefree means having no worries or troubles. उसके चेहरे पे जो ये बगैर
कोई शिकन, बगैर कोई परेशानी, बगैर कोई उसके जो वरीज थे, जो समा दिखाई दे रहा था, वो उसने खो दिया था. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. When he was going to pick rags, he would carry a plastic bag. But this canister which he carries this time seems very heavier, because this was not his own choice. This was a forced, one should say, forced engagement imposed on him. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. Ab Sahib jo, he is no longer his own master. He can't do anything by his own will, by his own choice. Because when the canister belongs to the other man, with the canister, his will, his activity, his everything belongs to this man, belongs to other man. ये अपने आप की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता है. गुर्बत ने इसे किसी का गुलाम बना दिया है, और इसी गुर्बत की वजह से, इसी गुलामी की वजह से जो अब उसके चेहरे पर जो बिल्कुल नुमायां जो परेशानी के आसार थे, गुर्बत के आसार थे, उसका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा था. ये इसी वजह से था कि उसने अपनी आज़ादी गुर्बत की वजह से अब खो दी है. Thank you very much. This is enough for today. And before we will conclude, let's have an assignment for you. Hope that you will not you will not act as a casual manner. So be particular, and so be very responsible with your studies. द असाइनमेंट नंबर 1 जो हमने पढ़ा इसी के बारे में है. आप इसको गौर से पढ़िए और इन क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा, और ज़रूर मिल जाएगा. आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006759649 पर भेज दीजिएगा. हु इज़ नॉट नाउ हिज ओन मास्टर. अब कौन अपना मालिक नहीं है. वायर डिड द राइटर फाइंड साहिब वन मॉर्निंग. What were two young men doing in a club? And number 4 है, which dream of Sahib had come true? Which dream of Sahib had की जगह आप has पढ़ लीजिए, has come true. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आप उम्मीद है कि आप को जो असाइनमेंट दिया गया है आप इस पर काम करेंगे.